Hi guys, my name is Soham Joshi and I am in third year of engineering in electronics and telecommunication at SPIT College Mumbai. So on this channel, we'll be learning class ninth and class 10th maths and science, that is CBSE. Okay, so I'll be teaching maths and science for class 10 and class 10. So today we'll be starting with our first chapter of maths, that is orienting yourself, the use of coordinates. Okay, so the first question arises, what do we mean by coordinates? Like, what does it mean? Why do we use coordinates? So let us understand coordinates in a very basic manner. Okay, okay. So yeah. Uh let's take an example. Okay. So for example, let's say that you are in your school, uh, and assembly is going on. Here is the stage, and you are standing in a straight line. So let's say here you are standing. So I hope this is visible. Okay. So let's say the first person standing is person A, then B, C, D, E. Okay. So they all are standing on a single line. They are all standing in a single line. So let's say if you want to know that how far is person D standing from person A, how far the person D is standing from person A. So what can we say? That the person D is behind person A by two people, B and C. So like there is a difference. Let's say if the person is one, two, three, four, five. So person D is standing on position 2 and person A is standing on a position 5. So there is a gap of two people in between them. Okay. So this is what is known as number line. So let's say for a number line, here is 0. On the right of number line, we have positive integers. It is 1, 2, 3. And on the negative side, we have minus 1, minus. On the left side of the 0, we have minus 1, minus 2, and that goes up till infinity. Infinity. So this is how we represent 1D system, that is one dimension. So up up till now we have learned that what are coordinates, why do we use them? We use them, so we use what are coordinates. The basic definition, or for understanding, we can say that coordinates are the numbers that are used to describe exact positions of people, object, etc. So this is how we can represent. So this is known as 1D system. That is the assembly wala example. So that is the 1D system. We can say that this is a 1D system. So therefore, we use a number line to represent one dimensional system. Okay. So now, okay, all of you have watched many movies in theaters in 2D and 3D. So what is 2D and 3D? 2D is two-dimensional, 3D is three-dimensional. So far, we are not concerned with 3D, so we'll just keep 3D aside. Just for your reference, 3D is something that the whole universe exists in. So you, we are in 3D, three-dimensional. Okay, so here we'll not go further in this. We are just concerned with two-dimensional, so we'll be just sticking to 2D system. Okay. So what is 2D? As you as we saw that for 1D we use a number line. For 2D coordinate system, we use two lines, or say two number lines that are at right angle to each other. So what does a right angle mean? That is they have the angle between the two lines is 90 degree. So you can see that here we have a line and here we have a line. Both the lines are at right angle to each other. So the angle between these two lines is 90 degree. Okay. So this is how we represent a 2D space. So these both lines mutually make a 2D system.
Okay, so we'll not call these lines just lines. Okay, so we'll use some notations to call these lines. So the horizontal line, that is the horizontal line, we call it as x-axis. X-axis. I'm sorry for my handwriting, but I hope it is understandable. Okay, the horizontal line is called the x-axis, and the vertical line is called the y-axis. Okay, so I hope this is clear. The vertical line is called y-axis, and the horizontal line is called x-axis. And these two, when we get both the lines at right angle to each other, we get a 2D space, that is a 2D coordinate system. So now how do we represent a 2D coordinate system? As you saw in a number line, we have 0, we have 1, we have -1 as well. So in this coordinate system also, we have negative integers as well as positive integers, that is -1, minus till minus infinity, and from 1 till infinity, and 0 as well. Okay, so what are the basic sign conventions that we use here over here? So just listen to me carefully. All the points that lie above the x-axis, all the points that lie above the x-axis are positive. Okay. Second, all the lines that lie to the right of the y-axis are also positive. Understood? All the points above the x-axis are positive. All the points that lie to the right of y-axis are also positive. Third, all the points that lie below the x-axis are negative, and all the points that lie to the left of the y-axis are also negative. I hope this is clear. I'll just repeat it once again. All the points that lie above the x-axis are positive. All the points that lie below the x-axis are negative. All the points that lie to the left of y-axis are negative, and all the points that lie to the right of the y-axis are negative. Okay, clear it now? Okay. Now I told you that we have 0 as well. So how do we denote 0 or something that is called as origin? So the intersection of x and y axis is known as the origin. This intersection that you can see is called as the origin, and this is denoted by 0 comma 0. I'll tell you what does the curved brackets mean, but till the time you just remember that the intersection, the point that we the intersection of x and y axis is the origin, and that is denoted by O, and also 0 comma 0. Okay, so what is 0 comma 0? Now we will understand that how now we saw that the points, the sign convention. So we'll just write the points over here. That is 1, 2, 3, so on. Then to the left of to the below the x-axis we have negative -1, -2, -3, and so on. Then here also we have -1, -2, -3, -4, and so on. This is 3. Here we have +1, 2, 3, okay, and so on. So yeah, so all the points that lie on the x-axis are x, and all the points that lie on y-axis are y. So for origin, you can see, and this braces is in the sequence of x comma y. Always, this is universal, that we represent a coordinate system in this format, that is x comma y. So here you can see that for origin, the value of x is also 0 and the value of y is also 0. That is the intersection of x and y axis. X and y axis intersects only at one point, that is 0 comma 0, and that is the origin. To the right of origin we have positive x axis, to the left of origin we have negative x axis, to the above the origin we have positive y axis, and below the origin we have negative y axis. Here you may write negative x axis. Okay,
So so far, I hope it is clear. So far we have learned 1D system. Why do we use coordinates? What are coordinates? Then 2D Cartesian coordinate system. How do we? What is 2D coordinates? What are 2D coordinates? How do we represent them? How do we use the sign conventions? Okay. Now, moving further, we need to learn something called as quadrants. It may sound थोड़ा सा ऐसा heavy, but it is not, and it is very easy to remember also. Not a big deal. Oh shit. I'm sorry, just a second. Let's get this again. Okay. So now what is quadrant, or what is a Cartesian plane? We can say that the plane in which the axes are situated is called Cartesian plane. So you may have noticed that y-axis, x-axis, and axis, that is A-X-E-S. Axis is the plural form of axis. Okay. So when we want to represent more than one axis, we use the word axis. This is just simple grammar. That's okay. उतना गलत हो तो भी चलता है. It won't make a difference. Okay, so what are quadrants? So basically ये जो अपना y and x axis से बना है, that is the Cartesian plane or coordinate plane or xy plane. अपन it is called as xy plane. तो ये total plane is divided into four quadrants. So अभी वो four quadrants कैसे है? Like कुछ तो rule होगा ना कि four quadrants को अपन divide कैसे कर रहे हैं? कौन से quadrant में कौन सा point आएगा? कौन सा point कौन से quadrant में आएगा? So for this we have four quadrants. अगर तुम इसको इस फिगर को तुम नोटिस करोगे, दैट इज द जो ये तुम्हारा फिगर ऐसा बना है, इसमें तुमको ऑलरेडी फोर पार्ट्स दिख रहे होंगे. एक y, पॉजिटिव y और पॉजिटिव x एक्सिस से बना हुआ, दैट इज हियर. एक एक नेगेटिव x एक्सिस, एक नेगेटिव x एक्सिस और एक पॉजिटिव y एक्सिस से बना हुआ इधर. एक नेगेटिव x और एक नेगेटिव y से बना हुआ इधर, और एक पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से बना हुआ इधर. So I'll tell you how do we represent. So quadrants. So this is the first quadrant. ठीक है. First quadrant में क्या है? When when x is also positive and y is also positive, we say that the point lie into the first quadrant. That is this quadrant. X positive, Y positive, first quadrant. Khatam baat. Second. Now the second quadrant. Come to the left side. पहले पॉजिटिव था, x को नेगेटिव करो, y को सेम रख दो. x नेगेटिव बन गया. ठीक है. वेरी गुड. x x नेगेटिव बन गया. y अभी भी पॉजिटिव है, y को छुओ ही मत. y भी पॉजिटिव बन गया, हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. जो भी पॉइंट माइनस एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रहेगा, जो कुछ पॉइंट मिलेगा, दैट इज तुम्हारा, दैट पॉइंट लाइज इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. नाउ कमिंग गोइंग फर्दर, थर्ड क्वाड्रेंट. अभी एक्स को माइनस रखा था ना, तो उसको माइनस ही रखो. वाई को प्लस था, वाई को भी माइनस कर दो. हो गया. माइनस माइनस दोनों एक्सिस माइनस, बन गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये इतना पूरा मोटा मोटी तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है. ठीक है. अगेन आगे जाओ, राइट में जाओ. एक्स को अभी एक्स को माइनस, अभी एक्स को चेंज कर दिया ना, अभी एक्स को वापस चेंज करो. एक्स को पॉजिटिव कर दो, वाई को सेम रखो, वाई को नहीं परेशान करते. एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव बन गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है. सो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज एक्स ऑल्सो पॉजिटिव, वाई ऑल्सो पॉजिटिव. देन वी हैव सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव. Then we have third quadrant, that is x is also negative, y is also negative, and then we have fourth quadrant, that is x is positive and y is negative. So this is how we represent the coordinates कि ऐसा ऐसा है. ये coordinates है. ठीक है. इसको अभी साइड में रखो, बनाते हैं इधर. ठीक है. ये साइड में गया. ओके. ठीक है. हम्म. अभी नाउ यू विल से कि हाँ चलो हम तो सीख गए कि एक्स और वाई ये है, एक्स और वाई है.
हाउ डू वी पॉइंट हाउ डू वी प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, अच्छा सा। अच्छा तो मतलब क्या ही बनेगा मुझसे, बट ठीक है, आई विल ट्राई। ए, अरे इसका थिकनेस तो बढ़ाया था मैंने, बढ़ा के नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है अच्छा है। Also make sure that you put your feedbacks in the comment section so that it would help me to improve myself, okay। and also तुमको कुछ अगर दिक्कत डाउट हो वो भी तुम comment section में डाल सकते हो। अ, ठीक है। अब ओके, हाँ, तो ये नंबर लाइन तो बन गई। अभी इस पे कोऑर्डिनेट्स 1, यार, 1 2 3 4, ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, 4 तक ही जाते हैं। 1 2 3 4। आई होप ये बहुत ही ऐसा chaotic नहीं लग रहा हो, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। सॉरी फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड ऑल्सो दिस माई फर्स्ट वीडियो, सो मे बी अभी तक मुझे प्रैक्टिस हुआ नहीं है। मे बी इन फर्दर वीडियोस जैसे जैसे मैं और पढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे ये इम्प्रूव होते जाएगा। आई होप सो। 1 2 3 4। ओके, सो हम हर एक क्वाड्रेंट का एक एक पॉइंट लेके देखेंगे एंड विल प्लॉट द पॉइंट, ठीक है। अभी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं? मान लो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 3 4। सो as earlier I mentioned that the first point is x and the second is y, this is x and this is y, ठीक है। पकड़ लो, तुमको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी, दिस इज माइनस y एंड दिस इज माइनस x, ठीक है। x क्या है तुम्हारा? 3 है, x पकड़ लो 3, मिल गया x 3, x मिल गया 3, ठीक है। x मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। y क्या है? 4, 4 देखना है अभी। y पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर? y इधर। पॉजिटिव y है इधर, ये पॉइंट। बस अभी जो x एक्सिस है, x एक्सिस से एक सीधी लाइन ऊपर खींचो, और y एक्सिस से एक राइट हैंड साइड की तरफ लाइन खींचो। खींचते जाओ, ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, खींचते गए, खींचते गए। ये जो तुमको पॉइंट मिला ना, जो कि है एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन का 3, और वाई एक्सिस से जो 4 मिला उसका इंटरसेक्शन, ये तुम्हारा पॉइंट बन गया। लेट्स से पॉइंट ये था ए, तो ये बन गया तुम्हारा पॉइंट ए। गॉट इट? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये चलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉइंट बनने प्लॉट कर लिया। बस तुमको देखना है कोऑर्डिनेट कौन सा दिया है, साइन क्या दिया है, सीधा वो पॉइंट देखो, उससे एक लाइन मतलब रिस्पेक्ट में लाइन खींचो, इंटरसेक्शन जो मिला वो तुम्हारा पॉइंट हो गया। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से पॉइंट बी, दैट इज -2, 1, ओके, ठीक है। -2 ढूंढो अभी। पहला कौन सा है? एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में मिलेगा अपने को -2, तो यहाँ मिल गया -2। अभी चाहिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज 1, यहाँ पे मिल गया 1। तो यहाँ से एक लाइन ऊपर ऊपर खींचो, यहाँ से एक लाइन ऐसा साइडवेज खींचो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, चलो लेट्स से आई विल जस्ट रब दिस एग्जांपल। तो लेट्स से वी हैव पॉइंट सी, दैट इज -3, क्योंकि अभी why am I saying that this lies in the third quadrant? क्योंकि देख लो ना यार, -3, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट भी तो रहेगा, और क्या आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है।
-3 चलो x चाहिए, x-3 यहाँ मिला। y में ओह सॉरी ये माइनस है ना सब। y में -3 चाहिए, ये लो, ये मिला। इसका सॉरी इधर, इसका इंटरेस्ट अभी यहाँ से x एक्सिस से वर्टिकल लाइन खींचो नीचे, y एक्सिस से वर्टिकल लाइन खींचो इधर, ये तुमको मिल गया इंटरसेक्शन, ये होगा तुम्हारा पॉइंट सी। गॉट इट? क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मान लेते हैं अपने को चाहिए, अरे वाह, अपने को चाहिए डी। डी कहाँ से मिलेगा? डी चाहिए समझो +2 और -4। तो देख लो कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 +2 है, +2 यहाँ मिल गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, -4 का नेगेटिव पे, इसको खींचो ऐसा। ओके, जैसे जैसे खींचते जाओगे यू विल गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द पॉइंट डी। So this is how we plot the points on an axis. Okay. Also for your reference, I'll also show how when one coordinate is zero and other is non-zero, so वो कैसे plot करते हैं? That is very easy brother, उसमें intersection वगैरह का कुछ झंझट है ही नहीं, थोड़ा रंग बदल लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो पॉइंट ई है, अइला क्या कलर है, हाँ, मान लो पॉइंट ई है जो कि लाई करता है 4,0 पे। तो क्या है 4,0? ये चलो एक्स एक्सिस पे देखो 4, ठीक है ये मिल गया। अभी वाई एक्सिस पे 0, अभी ये अपना ओरिजिन था, मतलब वाई 0 मतलब यही वाला पॉइंट हुआ ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा पॉइंट ई यही रहा, और किधर जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। दिस इज योर पॉइंट ई। ठीक है, सो बेसिकली तुमको एक्स एक्सिस से जो कोई पॉइंट लेना होगा उसको तुम वर्टिकली उसको लाइन खींचो, वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, सो दैट यू विल गेट एन इंटरसेक्शन, और वो इंटरसेक्शन तुम्हारा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है, मान लो y 0 है, तो वो तुम्हारा पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, एंड इफ x एक्सिस इज 0, x पॉइंट इज तुम्हारा 0, देन योर कोऑर्डिनेट विल लाई ऑन y एक्सिस। सिंपल, क्लियर, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, मूविंग फर्दर, we will now see how to calculate the distance between two points. And this chapter is very chotu sir. This is the last topic that you have. Yeah, yes, this is the last topic you have. How do we calculate the distance between two points? इसको थोड़ा ना यहाँ लेते हैं अपन. Hmm, That's fine, I guess. Yeah. Okay, so far we have learned ki introduction to coordinates, what are coordinates, how do we use coordinates, why do we use coordinates. Then we have the 2D Cartesian system, that is we use two axes to represent the 2D space. ठीक है, x axis, y axis, तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए हैं. This is also a good thing to learn about. Then you have exercise. I assume that you can solve this exercise. एक बार just go through your book. Also in the starting of your book you have very good history given. थोड़ा Pythagoras वगैरह के बारे में बताया गया है. And that is actually good to read. So I suggest you to go through it once. Okay. Now second thing we have, second and the last thing that for this chapter. This is a very छोटू chapter. ठीक है. That is the distance between 2 points in a 2D plane. अभी जैसे मैंने बोला था कि चलो एक बंदा है, इधर समझो 1D स्पेस है, इधर 0 इधर 1 है, इधर 2 इधर -2 इधर -1, ऐसा ऐसा है, ये 0 था। अभी मुझे कहना है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इस बंदे से ये वाला बंदा कितना दूर खड़ा है। तो मैं क्या करूंगा ना कि दिस माइनस दिस वन, मतलब 1 माइनस -2 मतलब 3 हो जाएगा बेसिकली, 0 1 2, तीसरे डिस्टेंस
3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे खड़े हैं। सो अभी ये तो मैंने 1D में कर लिया। हाउ विल आई डू इट इन 2D, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स के साथ डील करना है। तो उसके लिए एक बेसिक सा तुमको फॉर्मूला गिवन है। एक बार आई जस्ट टेल यू दैट हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, ठीक है। एक बार ये ग्राफ को ना तुम ध्यान से देखो। ये ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट नीचे एक्सटेंड करूं एंड ये वाला पॉइंट इधर एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। यू मे हैव you may have learned about Pythagoras theorem. If not, then I'll just tell you. This is if अगर यहाँ कोई 90, यहाँ अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो ये तुम्हारा जो ये साइड होता है ना, ये जो लंबा वाला साइड जिसको दिख रहा है, इसको यू कॉल इट एज हाइपोटेनियस। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट यूजिंग एच। This would be very useful for your class 10th maths, because you will be introduced with trigonometry. So वहाँ पे बहुत यूज होता है ये। Let's just not go there. We'll stick to our topic. तो ये जो हाइपोटेनियस है, मान लो ये साइड है मेरी छोटी ए, इस पॉइंट को कहते हैं सी, और ये मेरा साइड है, इसको कहते हैं ए सी, और इसको कहते हैं सी डी। सो व्हाट डज पाइथागोरस से दैट if I want to get the length of hypotenuse, that is AD, तो AD whole square is equal to AC whole square plus C, AD उल्टा क्यों निकाला मैंने, हाँ, CD का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी गेट द, इससे अपने को मिलता है। सो बेसिकली अपने को ये जो डिस्टेंस निकालना है, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। अभी ये प्रूफ आई विल नॉट टीच यू द प्रूफ, मुझे जस्ट बताना था है कैसे आया, जस्ट टू टेल यू ये कैसे आया। मान लो ये सी पॉइंट है, ये सी डी है, ठीक है, ओके। तो तुमको एक्स कोऑर्डिनेट, अगर तुमको सी डी चाहिए, तो तुमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ये माइनस ये करना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम्हारे टीचर तुम्हें स्कूल में प्रूफ सिखा देंगे उसका, दैट इज नॉट अ बिग डील टू लर्न। विल जस्ट learn the formula, okay? Okay. So what does the formula say? That the distance between 2 points, let's say we are given with point x1 comma y1 and point x2 comma y2, ठीक है। If we are given with these 2 points, then the distance between them is equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। तो ओके, इतना क्लियर है। ये तुम्हारा जो प्रूफ था, मैंने जो पीछे बताया, ये तुम्हारा वो प्रूफ का सब है। दैट इज नॉट आवर थिंग टू डू, ठीक है। सो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। लेट्स से टेक एन एग्जांपल। मुझे पॉइंट ए दिया है 1,1, पॉइंट बी दिया है 2,3, ठीक है। अभी मुझे डिस्टेंस चाहिए ए बी, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स बी माइनस ए, ठीक है। कैसे, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज डी, मैं मान लेता हूँ मेरे जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो x2 और y2 है, और ए के कोऑर्डिनेट्स है y1, x1 और y1, ठीक है। तो मेरा x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये पूरा रूट में आ, प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? सो लेट्स से डी, इसको ऊपर कर सकते हो, नहीं ठीक है, इधर ही ठीक है, डी है ये। 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1, 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस 3 - 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 1 + 4 5, तो ये रूट 5 इसका आंसर है, दैट इज रूट 5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि भैया अभी तुमने पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिए फिर ए के कोऑर्डिनेट्स लिए, नो प्रॉब्लम। तो पहले तुम पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लो फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लो, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे वी आर स्क्वेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन देम। तुमने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मैं बताता हूँ कि कौन से भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नो स्क्वायर इज नेगेटिव। मैं अगर
टू का स्क्वायर लू, टू का स्क्वायर भी फोर ही होता है, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर ही होता है। द रीजन बिहाइंड इट इज, तुमने सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन में कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सो दैट इज द सिंपल थिंग बिहाइंड इट, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व। ठीक है, दिस इज वाई अगर मैंने उल्टा भी कर लेता, मैं मान लो मैं यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे वन माइनस टू भी कर लेता, तो भी वो माइनस वन का ही स्क्वायर होता है, एंड दैट वुड हैव कम वन ओनली। हियर ऑल्सो वन माइनस थ्री भी कर लेता, तो दैट वुड हैव ऑल्सो कम माइनस टू, एंड उसका स्क्वायर भी फोर ही होता। सो अगेन मुझे वन प्लस फोर रूट फाइव यूनिट से मिलता। सो वही आंसर होता था। सो दैट इज द ओनली थिंग टू लर्न। और जस्ट फॉर्मूला याद रखो, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस छोटू क्यूट सा चैप्टर। इसको बस एक बार गो थ्रू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इफ यू हैव made some notes from your class, refer them. Also refer the examples that your teacher has taken. Those are very helpful in general also. And solve the exercises. If you have any doubts, just let me know in the comment section. Also, please put your feedback in the comment section. That would help me to improve my teaching style, whatever your feedback would be. Okay, and also I'm sorry for my handwriting. I'm trying to improve it. यहाँ पे exercise is quite big. I hope तुम्हारे स्कूल में ये solve करके देते होंगे। नहीं देते होंगे तो भी you try it once. If you don't get it, go to your ma'am, ask her. She or he will definitely help you, and just get your doubts clarified. And if not, then you can put it in your comment section. I'll definitely try to clear your doubts. Maybe recording some video or putting up the solution. Putting up the written solution. Okay. So quickly in a minute, we'll just revise what we have learned so far. Okay. लोड हो जा, हाँ। ओके, इंट्रोडक्शन की कैसे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। बेसिकली वी यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड थिंग वी हैव लर्न दैट इज द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो बेसिकली इन 2D कार्टेशियन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी यूज टू लाइंस दैट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड फिर देखा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज द एक्स एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ओरिजिन कहते हैं, दैट इज दिस पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव लर्न कि कैसे उसको करते हैं। क्वाड्रेंट सीखे हमने, ये क्वाड्रेंट वन, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव आई एक्सिस, ये नेगेटिव आई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेंट मार्क किए, एंड देन द लास्ट टॉपिक वी डिड वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला दैट इज गिवन। ये वाला तुम फार्मूला देख सकते हो, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट इन करने एंड यू विल गेट द आंसर। This is a very nice chapter. Okay, so I hope you have understood all the concepts and all the theory we have covered so far. If not, then if you have any doubts, please put it in the comment sections. I'll definitely try to clarify them. So I have covered this chapter. थोड़ा time exceed कर दिया. This is my first video. I'll try to make it थोड़ा छोटा. I know because you have school, you have other things to do, and then again investing this much amount of time is not feasible. But yeah, this is the first video, so I hope you understand. And okay, so far we are done with this chapter. Solve the exercises, go through your textbook. Also, I would suggest to plot some points on your graph paper. Basically, this is a graph paper only, or try to make the points equidistant. I was not able to make it very good uh, in a good manner, but I hope you have understood what I have done. Okay. So yeah, thank you so much for watching this video. Next we'll cover our chapter 2, and also parallelly I'll be putting up videos for science class 9th, and for maths and science of class 10th also. I'll make four separate playlist and put in the and upload the video over there.
Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Take care. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।